Good evening, beta. Am I audible to everyone? Yes, sir. Chalo. I hope you have revised your complete units and dimensions part of relation, beta. Within 1 minute, we'll try to start the problems, beta. ये assignments मैंने आप लोग को ऑलरेडी भेज चुका हूँ आप ग्रुप में. फिर एक बार आप करने के बाद I'll try to send you out that remaining questions also. Okay? स्टार्ट कर लें बेटा. चलो. Am I audible to everyone? Yes, sir. चलो. See this question, beta. The density of the solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge, whose pitch is 0.5 mm, and there are 60 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm, and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, what is the relative error in the density? As it is a screw gauge, beta. Okay. First, calculate the least count of this one, beta. Least count will be equal to how much for me? What is the formula for screw gauge, beta? Pitch divided by number of your divisions, number of your circular divisions. So pitch is how much in the given problem? 0.5 mm divided by circular scale divisions on that one is how much for me? 50. Okay. So this value will be equal to 0.01 mm. This is the least count. Now how do you calculate the diameter? Diameter means reading of the screw gauge. So diameter will be equal to your main scale reading plus of your circular scale reading multiplied by least count. What is the main scale reading has given for me? The reading on the main scale is 2.5 mm. So it is 2.5 mm plus number of circular divisions on the circular scale is how much for me? 20 into least count is 0.01. Okay. So this value will be equal to how much for me, beta? 2.5 plus this will be equal to 20 into 0.01. It will be your 0.05. This will be equal to your 67. That means if I simplify it totally, it will come out for me 2.7 mm. That is the diameter. What is asking if the measured mass of the ball has a relative density of 2%. The relative density in the density is asking. Now density का formula क्या होता है बेटा? Density is equals to mass divided by volume. So it is equals to mass is right now for me m. Volume of the spherical body is 4 by 3 pi into your r cube. R is not given, diameter is given for me. So it is mass divided by 4 by 3 pi into this is d by 2 whole cube. Okay. Now percentage error in density, how to write beta? Delta rho divided by rho into your 100 will be equal to your delta m divided by your m into your 100 plus 3 times of your delta d divided by d into your 100. That is equals to the measured mass has a relative density of 2%. This is totally given already for me as 2% plus this is 3. The relative percentage error in the density is asking. Delta d by d will be equal to how much beta? Delta d means error in the diameter. That is how much for me? Least count 0.01.
divided by diameter. Diameter is 2.7 into your 100. So this will be equal to 2% plus this will be equal to, this will be 3 into 0.03, 0.03 divided by 2.7. 0.03 divided by 2.7 into your 100. So this 100, this 2 will get cancelled. So it is 3 divided by 2.7. So that is roughly 2% plus this will be equal to 1.1%. So that will be approximately 3.1% will be the answer for me. So third option will be the answer. Very good question, beta. Maximum chances are the students will leave this question. So first one, we need to calculate the pitch that we are getting 0.1. Then diameter is nothing but reading of the screw gauge that I'm getting as 2.5 mm. Then we need to use the density formula, and as this is spherical body, a solid body, volume of the solid body is 4 by 3 pi into your r cube. So simplifying it, radius is not given, diameter is given for me. So I'm writing that one in terms of diameter. Now this is the way how do you write the relate error part. एरर एंड इंस्ट्रूमेंट दो मिला के क्वेश्चन दिया देखिए इसका, isn't it? Mass के अंदर already has given me the error as 2%, that I directly have taken 2%. It is 3 into delta D is nothing but equal to your pitch, that is nothing but least count in the density of this one will be equal to 0.01, and diameter I calculated as 2.7 into 100. इसको simplify कर लीजिए, you will getting 3.1%. Am I clear beta? Am I clear? Very good question. Done. चलिए 7th क्वेश्चन देखिए बेटा. A body is been moving with a velocity of 30 meter per second towards the east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards the north. The average acceleration will be equal to how much for me? See, if I'm taking the directions beta, first let me define the directions. This will be equal to east, this is your west, this is your north, and this is your south. Now the problem is telling that a ball is moving with a velocity of 10 meter per second towards your east direction. Now in this direction, it is moving with what direction? Right here, 7th one. See here. Velocity along east direction. That means I cap Vi will be equal to, Vi will be equal to how much for me? Along x-axis, it will be equal to how much? So in this direction, it is right now how much for me? 30. This will be equal to 30 I cap. And towards the east, he is telling. After 10 seconds, the velocity becomes 40 meter per second. It is going towards the north. North, it is been going with 40. That is 40 into your J cap. The average acceleration is asking. So I hope it is a direct question. You might have been doing this one. चलो करके बताइए कितना होगा. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय योर टोटल टाइम टेकन. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा राइट नाउ फॉर मी? Fourth option. या हाउ मच आई एम गेटिंग? कितना आ रहा है बेटा? समवन इज गिविंग मी एन आंसर. व्हिच ऑप्शन? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन आ रहा. लेट मी चेक. इस डायरेक्शन मतलब v इनिशियल इज इक्वल्स टू 30 i cap and v final will be equal to how much for me? 40 j cap. Average acceleration is nothing but for me magnitude of this one. So this will be equal to how much for me? Under root of your, this value will be equal to your v final is 40 whole square plus of your, this one is 30 whole square divided by 10. Average acceleration है ना बेटा? So that will be equal to how much for me? 4 4 is 16. So it is under root of your 1600 plus 3 3 is 9. This is 300 divided by your 9. Isn't it? So it is under root of your 1600 plus 900 divided by your 10. See how much I'm getting, you see? कितना आ रहा है? Under root of your 2500 divided by 10. So this value will be equal to how much for me? 50 divided by 10. 10 ones, no, 500, na? Sorry. Yeah, this will be a 500. चलो कितना आ रहा? 50 divided by 10. So it is 10 ones are 10 fives are 50.
That means 5 meter per second square. This will be the acceleration. Third option आ रहा ना बेटा. Clear? Am I clear with this one? Am I clear? चलो 14th वन देखो बेटा. 14th क्वेश्चन बताइए जल्दी से. Anyone? Question number 14. In a vernier caliper, 10 divisions of the vernier scale is equals to your 8 divisions of your main scale. Okay, that means given for me 10 vernier scale divisions is equals to your 8 main scale divisions. Okay, and what is given yesterday? One main scale division is equals to 1 MSD. 1 MSD is equals to your how much for me? 1 mm. While measuring the diameter of the spherical body, it is observed that 0 of the vernier scale lies between 40 and 41 divisions of the main scale, and 7th vernier scale exactly coincides with the main scale reading. The diameter of the spherical body will be equal to your how much? So first you calculate the least count beta. Least count of the vernier scale will be equal to how much beta? 1 MSD minus of 1 VSD. ठीक है ना. 1 VSD कितना आ रहा बताइए इसमें से. So from this one I can calculate 1 VSD will be equal to 8 divided by 10 MSD, isn't it? So if I simplify that value here right now for me, it is your 1 MSD minus 1 VSD is 8 divided by 10 MSD. So MSD if I take common right now for this one, it will be equal to 1 minus of your 8 divided by 10 main scale division. One main scale division is how much बेटा बेटा. तो ये कितना हो जाएगा बेटा. 10 minus 8 it is 2. 2 divided by 10 into 1 MSD is equals to your how much for me. 1 MSD is equals to your 1 mm. Okay, so it is 2 by 10 is right now for me 0.2, so it is your 0.2 mm. That will be equal to centimeters में दे रखा है, so it will be 0.02 centimeter. 1 mm is equals to 0.1 centimeter. Okay, so it is 0.02 RI. So it is right now for me, that is the least count of this instrument. Okay, what is asking for me? The diameter of the spherical body. Diameter के लिए formula क्या use करोगे बेटा? What is the formula for diameter? That means reading of the vernier scale will be equal to your formula याद है? Main scale reading plus your vernier scale reading multiplied by least count करना है. Main scale reading कितनी है बेटा right now for me? What is the main scale which has been coinciding? While measuring the diameter, it is observed that the 0 of the vernier scale lies between 40 and 41 divisions of the main scale reading, and 7th vernier scale exactly coincide with the main scale part of relation. यानी main scale reading क्या होगा बताइए. What will be the main scale reading? Anyone? Problem में दे रखा है देखो. While measuring the diameter of the spherical body, it is observed that 0 of the vernier scale lies between 40 and 41 divisions of the main scale. Isn't it? That means main scale reading will become how much for me beta? 4. वेरी गुड. 4 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना कोइंसाइड हो रहा है. 7 इंटू लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट कितना है प्रॉब्लम है अपने को. 0.02 सेंटीमीटर्स. क्लियर. So now if I simplify this one, 4, it will be 7 to the 14. That means 0.14. 0.14. So it will be equal to 4 plus this is 0.14. It will be 4.14 centimeters. This will be the answer for me. Second option. Clear? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. ओके, मेन स्केल रीडिंग का इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर. ओके, चलिए 28 का आंसर बताइए अभी. The speed of a moving object is expressed in terms of time t as v is equals to under root of pq plus at plus r divided by s plus of u t. Use the principle of homogeneity. LHS must be equal to your RHS. So what is given for me in the problem is
The speed means v value is equals to under root of your p plus q. This is also equal to q into t plus this is also equal to r divided by s plus t. That means v value must be equal to your, what must be, it will be, it must be equal to q into t. Then acceleration is represented, he is asking right now for me, isn't it? So if I'm taking it is a q into t right now for me, velocity is equals to, then the acceleration is represented by v is equals to your u plus of v is equals to body is moving expressed in terms of time, under root of p cube, that must be equal to q into t. Then acceleration is represented by the given condition. V is equals to u plus at लिख सकता हूँ बेटा मैं, isn't it? So then v must be equal to q into t. Velocity का dimension कितना हो जाएगा, l t power minus 1, that is equals to your q. Acceleration is represented by, बोल रहा है, okay, I'll represent as q. This one is right now for me time t. तो इसमें से q निकालो, q is equals to your l t power minus 2 आ रहा. तो acceleration is represented by term q, I can say here right now for me. So it should be represented by your q. आप हर चीज के लिए चेक कर सकते हो बेटा. सर वाई आर टेकिंग ओनली q2, यू कैन इवन टेक दिस वन ना बेटा. सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर p इंटू q. यहाँ पर टू अननोन है, यहाँ p भी नहीं मालूम है मुझे, q भी नहीं मालूम है. यहाँ पर भी तीन अननोन है राइट नाउ फॉर मी, r इंटू आर ऑल्सो अननोन फॉर मी. तो इसमें एक ही अननोन है राइट नाउ फॉर मी. t का तो डायमेंशन मुझे मालूम है. So that is the reason I'm taking v is equals to your a into your t part of relation. So q is representing me the acceleration lt power of your minus 2. Clear? Any doubt? डन बेटा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से. A boat is moving with a velocity of 3i cap plus of your 4j cap. So this is the velocity of the boat with respect to the ground. That is your 3i cap plus of your 4 into your j cap. With respect to ground, the water in the river is moving with a velocity. Velocity of your water with respect to ground, that is given as minus of 3i cap minus of 4j cap. That means velocity of boat and velocity of your water is been given. He's asking me the relative velocity of boat with respect to water. That means velocity of boat minus velocity of water. Okay. ये पूरा velocity of your boat ले लीजिए. So velocity of the boat will be equal to 3i cap plus of your 4 into your j cap. So this is your boat with respect to ground. Velocity of ground anyhow 0 ही होगा. So it is 3i cap plus of your 4 into your j cap. Minus velocity of water is minus of your 3i cap minus of your 4 into your j cap. तो कितना हो जाएगा बेटा, 3i cap प्लस ऑफ योर 4j cap माइनस ऑफ माइनस प्लस 3i cap माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ योर 4 इंटू योर j cap. i cap ऐड हो जाएगा, 3i cap प्लस 3i cap इट विल बी 6i cap प्लस 4i cap प्लस 4i cap इट विल बी योर 8j cap. So the answer must be equal to 6i cap plus 8j cap. A will be the answer for that one. Clear? See, velocity of boat with respect to ground means velocity of boat minus velocity of ground. अब ground तो चलेगा नहीं ना बेटा, it will be zero. That means velocity of boat with respect to ground मतलब velocity of boat ही है. Velocity of water with respect to ground मतलब क्या, velocity of water ही only, क्योंकि ground का velocity तो rest पे ही रहेगा ना बेटा. Am I clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा. इन ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ना, माइक्रो स्क्रू गेज का और एक नाम भी है माइक्रोमीटर बेटा. इन ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज द रोटेटिंग द थिम टिम्बल थ्रू 8 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी सर्कुलर वाले को हम लोग 8 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं. इट कॉजेज इट टू एडवांस, यानी सामने कितना मूव कर रहा है, 2 mm along the main scale. If the circular scale contains 80 divisions, what is the least count of this instrument? I hope you can do this question beta easily. 8 complete revolutions is advancing how much for me beta, 8 mm. ओके तो एक रेवोल्यूशन कितना देगा. ओके so what will be the pitch right now for me, 8 complete revolution causes the spindle to advance by your 2 mm. 8 बार अगर हम लोग फिरा रहे हैं तो it is advancing by 2 mm right now, and circular scale is having how much for me divisions, 50 divisions. तो इसका pitch निकालो पहले. So pitch will be equal to कितना mm जा रहा है सामने, 2 mm divided by
सर्कुलर स्केल कितने डिविजन्स में? 8 डिविजन्स में, यानी पिच विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 0.25 mm। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर मैं एक बार लिख के बताता हूँ। 8 रोटेशंस अगर अपने को 2 mm दे रहा, तो 1 mm कितना, 1 रोटेशन कितना देगा? सो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 mm डिवाइडेड बाई 8 होगा ना बेटा। सो 2 1 1/4, so 1/4 is nothing but 0.2. So this is right now for me pitch, pitch is equals to 0.25 mm. अब लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे बेटा स्क्रू गेज के लिए? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ योर सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच इज हाउ मच फॉर मी? 0.25 mm divided by number of circular scale divisions are how much for me? 50. So it is 25 ones are 25 twos are 1/2 is 0.5 into this one. That means this is 0.005 mm. This will be the answer for. Clear? Chalo. You can leave the 8th question beta. 26th question देखिए बेटा. I hope everyone can do this 26th question. A force is defined as F is equals to AT plus B into T, where A and beta ये है, ये अल्फा है शायद अल्फा, अल्फा into T plus beta into T, where alpha and beta are constants and T is the time. Which of the following expression is dimensionless? Again very good question बेटा. गिवन क्या है मेरे पास? F is equals to your alpha into T plus beta into T, समझो बेटा. This means both homogeneity principle लगा रहे हो आप, तो F must be equal to alpha into T. In the same way, F must be also equal to your beta into T. Clear? That means A into T will and B into T will have the same dimension as that of your force. Alpha into T का भी dimension 4 के बराबर है. Beta into dimension is also equal to your force. Am I clear? That means I can get from this one alpha. Alpha is equals to force divided by your time. The same way beta is also equal to your force divided by your time. Okay. So force divided by time कितना आ रहा? See how much for me? Dimension of the force is ml t power minus 2 divided by your t. So this value will be equal to your m into l into t power minus 3. This is also same, m into l into t power minus 2 divided by your t. So this also comes for me ml t power of your minus 3. Am I clear? So that means alpha and beta are having the same dimensions. So if I take the ratios of that one right now, alpha divided by beta, alpha divided by beta. So it means alpha value is m l t power minus 3 divided by m into l into t power minus 3. पूरा cancel हो रहा है. That is nothing but 1. 1 is a dimensionless quantity. So that means what is the best option I can take right now for me? Fourth option. Alpha divided by beta. Clear? Any doubt in this one to anyone? चलिए. Question number 41 देखिए बेटा. A train of 150 meter length is going towards the north direction at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards the south direction parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is, ये relative velocity का concept है बेटा. उन क्या बोल रहा है? A train of length कितना है? 150 meters. That means length is given for me. L is equals to your 150 meters and it is moving with a speed of, that means v1. V1 is equals to 10 meter per second. And parrot is flying, that means velocity of parrot I'm taking as v2. V2 is equals to 5 meter per second, but they are in the opposite direction. So I can say that relative velocity of the parrot with respect to train is equals to velocity of parrot minus velocity of your train. Velocity of parrot is nothing but v2. This is minus of velocity of v1. V2 value is how much better? And both of them are moving in which direction? Opposite direction. Train is right now for me. This is minus. This will be equal to minus of your 10. So this will be equal to how much for me? Minus of minus, it will be plus, it will be 15 meter per second. So time taken to cross this length of the train will be equal to how much for me? S is equals to V into T I can take. S is nothing but, now he is asking me right now for me time. Time is equals to, distance is nothing but L divided by V relative I can say. Length is 150 meters divided by VPT is nothing but relative velocity. So that is nothing but equal to 15. 15 ones are 15 tens are. That means it will be equal to 10 seconds.
Fourth option will be the answer for that. Am I clear? चलिए, 2 is also in a lengthy question, beta. Let us try to go for this next question. 12th one देखो एक बार. I hope 12th one you can do it out everyone. चलो try करो एक बार. The derived quantity q is being defined as q is equals to x square y to the power of 3 by 2 divided by z to the power of 4 into root w. During an experiment, the percentage uncertainties in the measurement of quantities x, y, z, and w are found to be 2%, 4%, 1%, 5% respectively. Estimate the maximum possible percentage error in the calculated value of your capital Q part of relation. अब Q दे रखा है right now अपने को problem में. So what is the value of your Q he has given for me? So Q is equals to your x square y to the power of your 3 by 2 divided by z to the power of 4. This is under root of your W. Am I clear? That means अगर W निकाल दो मैं, this will be x square y to the power of your 3 by 2 divided by z to the power of 4 and w to the power of your 0.5 लिख सकता हूँ. Am I clear? आर एस रूट को w 1/2 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इफ आई एम राइटिंग द एरर इन दिस वन, तो एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू योर 100 will be equal to your, this is 2 times of your delta x divided by your x into your 100. Okay, plus next one is your 3 by 2 into delta y divided by y into your 100, plus it is 4 into delta z divided by z into your 100. Okay, plus it will be equal to 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, one in the same, into your delta w divided by w into 100. So this value will be equal to how much, beta? 2 into, this is how much right now for me? It will be 2% plus 3 by 2 is 1.5 into, next value is how much for me, beta? 4%, isn't it? Plus this is 4 into, next one is given as of your 1%, plus this will be equal to 0.5 into, this value is given how much for me? 5%. So 2 into 2, this will be equal to how much for me, beta? 4%, plus this will be equal to your 1.5 into your 4. कितना आ जाएगा? 1.4 is 3 by 2. 2 2 is 4, 4 2 is 6, ये हो जाएगा 6% plus 4% plus this is 0.5 into 5. That means it will be equal to how much for me? 2.5. 5 is 25.5 है. So this value will come out for me how much, बेटा? सबको ऐड कर लीजिए आप. This will be coming out for me to 4 plus 6 plus 4 plus 6, 2.5. That means 16.5 आएगा. So this is your 16.5%. So the answer for this one is A. Am I clear? Any problem in this to anyone? Clear है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. A man crosses a 320-meter wide river perpendicular to the current of water in 3 minutes. If it is in a still water, ये आप लोग पढ़े हैं बोट एंड रिवर का प्रॉब्लम? हम्म. ओके नहीं करे बोल रहा है. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, अदरवाइज डायरेक्टली 11th क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार. एनीवन? A boat A is being thrown up vertically from the ground. A body is being thrown up vertically from the ground with a velocity of your v naught. Okay, and another body B is simultaneously dropped from a height of h. They meet at a height of h by 2. If v naught is equals to your how much? Good question, but it is a lengthy question, so I hope you can even leave that question right now for this one. 29th one देखिए बेटा, कोई कर सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 29. नो दिस इज इंपॉर्टेंट. 29 वाला करने का मॉडल है. Student 1, 2 and 3 perform the experiment for measuring the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use a different length of the pendulums or record time for different number of oscillation. The observations are being shown in the table. Least count for the length is given as 0.1 centimeter and least count for the time is given as 0.1 second. If E1, E2, E3 are the percentage errors in the G, that is delta G by G into 100 for student 1, 2 and 3 respectively, then E1, E2 की वैल्यूज अपन को निकालना है.
तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप लोग को मालूम है सीधा सीधा, isn't it? So let me take the formula for this one. 29 के लिए टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? T is equals to 2 pi under root of your L divided by G. So time taken can be written as right now for me. Oscillations में दे रखा है तो it is T divided by N will be equal to 2 pi under root of your L divided by G. तो इसमें से एक्सेलरेशन निकालो बाहर, तो G वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 इंटू योर पाई स्क्वायर इंटू दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी एन स्क्वायर इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रूट है ना बेटा, रूट निकाल रहा हूँ तो बाकी के पूरे टर्म स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ इज आस्किंग द परसेंटेज एरर इन जी, यानी डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इंटू योर 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, उसको कुछ भी नहीं रहेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू योर 100। एम आई क्लियर? लेंथ एंड एन स्क्वायर राइट नाउ फॉर मी, गिवन टाइम इज ऑलवेज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट। सो डेल्टा एल का देखिए बेटा, ऑसिलेशंस दे रखा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम फॉर द वन इज 64 and the number of oscillations in that one is 8. Total number of oscillations for n oscillations is 12.8 and time period is given as of here 16. यानी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.1 हो जाएगी, isn't it? Because least count for the time is given as 0.1. Okay, and for the length it is also how much for me? 0.1 divided by original length कितना है right now for me? 64. So it is your 64 plus 2 into delta t is also for that one 0.1 divided by t is equals to how many oscillations? 16 oscillations for the given condition time period के लिए. So into your 100 कर लो. Okay, so see how much I am getting this one. इसका वैल्यू हो जाएगा for E1. ठीक है ना? उसी तरह से E2 you need to do it out. E2 will be equal to your 0.1 divided by 64 oscillations plus this is 2 into 0.1. This is also right now for me how much? 16. देखो सबके लिए रीडिंग सेम है 64 and as well as of your 16 सेकंड के लिए भी, isn't it? Into your 100. तो इन दोनों का तो ऑसिलेशंस की वैल्यू सेम आएगी, ये तो बहुत क्लियर है। देन ऑसिलेशन फॉर योर थर्ड बॉडी, so third body के लिए number of oscillations is 0.1, then number of length of the pendulum is right now for me at 20 plus this is 2 into delta t will be equal to how much for me? Time period for this one is right now least count तो 0.1 है और इसका length of time period is given right now for me how much? 9 multiplied by 100 कर लो। तो एक बात तो क्लियर है, इन दोनों की वैल्यूज तो सेम आएगी, ये वैल्यू भी सेम आएगी, विदाउट डूइंग यू कैन टेल दिस टू वैल्यू मस्ट बी सेम। ऑप्शन में कहीं देख रहा है देखो, E1 एंड E2 आर सेम बोल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन ही आपको सीधा सीधा इक्वल होगा, बिकॉज E1 की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी एंड E1 एंड E2 की वैल्यू भी मैक्सिमा और मिनिमम नहीं होगी। अगर एक मिनिमा एक मैक्सिमा दे रखा है मतलब दोनों भी मैक्सिमा या दोनों भी मिनिमा होना चाहिए। दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन आई कैन टिक इज E1 विल बी इक्वल टू योर E2। एम आई क्लियर? क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दिस वन आई एम गिविंग सम नंबर फॉर दिस वन, मान के चलो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32। चलो, a metal wire of mass 0.6 plus or minus 0.03 kg gram, radius is 0.4 plus or minus 0.02 mm and length is 6 plus or minus 0.03 centimeter. The the maximum possible percentage error in the measurement of the density will be equal to your how much? Okay, given क्या क्या है देखो प्रॉब्लम में, mass is given for me as of your 0.6 plus or minus 0.003 grams. Then radius of this one is given for me as 0.4 plus or minus 0.002 mm, ठीक है ना? And length of this one is given how much for me? 6 plus or minus 0.03 centimeters, ठीक है ना? वायर का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ इज ऑल्सो बीन गिवन फॉर मी। नाउ हाउ डू यू राइट द डेंसिटी फॉर्मूला बेटा? एनीवन? डेंसिटी इज इक्वल्स टू density of your wire will be equal to your mass of the wire divided by volume. So it is your m divided by volume is equals to area into its length. So that is equals to mass divided by area of circular wire will be pi r square into length l. अब इसका एरर लिखो, इसके अंदर कैसे लिखोगे? ये तो क्लियर है आप लोग को, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इंटू योर 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इंटू योर 100 प्लस पाई तो कांस्टेंट है, देन रेडियस 2 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इंटू योर 100 प्लस दिस वन इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू योर 100।
क्लियर है? सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में बताइए? डेल्टा एम की वैल्यू, दिस इज योर एम 0.03, दैट मीन्स इट इज 0.003 डिवाइडेड बाई मास इज 0.6 इंटू योर 100, ये हो गया मास, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? इट विल बी इक्वल टू योर 0.002 डिवाइडेड बाई एक्चुअल रेडियस इज 0.4 इंटू योर, ये हो गया 100, प्लस लेंथ, लेंथ के लिए एरर इज गिवन हाउ मच फॉर मी बेटा? 0.03 डिवाइडेड बाई 6 इंटू योर 100, ठीक है ना? सो अब इसको सिंप्लीफाई करो, सी हाउ मच आई एम गेटिंग राइट नाउ फॉर मी। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 100, ये जीरो चले जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5%, प्लस ये चले जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 0.2, 1/2 मतलब ये कितना हो जाएगा राइट नाउ फॉर मी? ये टू और यहाँ पर टू भी चले जाएगा, इट इज 0.01 इंटू 100, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1% आएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2 इंटू योर 100, दिस विल बी इक्वल टू 0.5%। आ गया? सो पूरा ऐड करो, कितना आ रहा है देखो? 2%। सो 2% मस्ट बी द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? एनी डाउट इन दिस वन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 39th one. A particle moves in a plane such that its position vector at a time t is given by r is equals to 4t square I cap plus 3t cube j cap. What is the magnitude of the velocity vector at t is equals to your 1 second? He is asking right now for me, isn't it? That means आपको magnitude of velocity निकालना है, दे रखा है प्रॉब्लम में r. So how do you simplify this one बेटा? First calculate the velocity, v is equals to dr divided by your dt, that is equals to d divided by your dt. R value is given as 4t square into I cap plus of your 3t cube into your j cap. I hope you can do this differentiation, everyone, isn't it? So this value will be equal to how much better? 4 is out. Differentiation of t square is right now for me 2t into your I cap plus 3 is out. Differentiation of t cube will be equal to how much better? 3 into your t square. And this one will be along your j cap. Okay. Am I clear? So this will be equal to 4 to the 8, 8 into t I cap plus of your 3 3 is a 9, 9 into t square into j cap. This is the velocity vector. Now t is equals to how much time is telling? 1 second. T is equals to 1 second. The velocity will be equal to your 8 I cap plus of your 9 j cap. Clear? Then if I'm taking the magnitude of this one, magnitude of the v will be equal to under root of your 8 square plus 9 square. That is under root of 8 8 is 64, 9 9 is 81. So this will be equal to your under root of your कितना आ रहा 80 plus 60 plus 5. So this will be equal to 5. This is your 14 root 145. Root 145 कितना होगा बेटा approximately? Approximately. पार्टिकल में 11 11 सा नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 13 हो सकता है, 15 नहीं होगा. सो अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट 13. दिस इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 12 मीटर पर सेकेंड कुछ आएगा. सो नियर बाय आंसर आई कैन टेक इज राइट नाउ फॉर मी 13 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन ही टक कर रहा हूँ बेटा, जो एकदम बड़े हैं आई एम लिविंग इट सो दैट इट विल बी डिफिकल्ट. लेकिन जो भी मॉडल्स मैं अभी करा रहा हूँ उसको आप लोग करने का एबिलिटी आना चाहिए. जैसे एरर के प्रॉब्लम्स पूरे हैं ना, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था. अगर देर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स आई ट्राई टू डू दैट वन अगेन इन एक्स्ट्रा टाइम. एक एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं आप लोग को एरर्स वगैरह और वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज वगैरह भी करा देता हूँ. सो डोंट टेक द टेंशन अबाउट दैट वन. बट जो लोग भी सुने हैं तो आप लोग को एक आइडिया आ जाना चाहिए. दिस वॉज द वे वी नीड टू डू द प्रॉब्लम्स फॉर योर एग्जामिनेशन हॉल. यानी इतना बेसिक नॉलेज तो अपने पास होना चाहिए फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 25, एनीवन? A physical quantity is given by q is equals to p square epsilon naught into t divided by e square.
आई एम लिविंग दिस वन बेटा, आप लोग कर लीजिए. डायमेंशंस ऑफ द पी, प्रेशर का डायमेंशन आपको मालूम है, परमिटिविटी का भी मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मालूम है. जस्ट ड्रॉ, राइट द डायमेंशंस एंड सिंप्लीफाई इट, विल गेट द आंसर फॉर दैट वन. ठीक है ना? आई एम लिविंग इट फॉर यू, यू प्लीज ट्राई टू डू ऑन योर ओन साइड. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करिए एक बार. रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है. ट्रेन ये इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप. A with respect, then B is moving with 10 I cap minus 10 J cap. What is the velocity of A relative to your B? So direct question है. Velocity of your A is given for me in the problem as 30 into your I cap plus 20 into J cap meter per second. Then velocity of your B is given how much for me? 10 I cap minus 10 J cap meter per second. Now he's asking for me the problem velocity of your A with respect to B. That means it is VA minus of VB bar, isn't it? So I hope you can do this calculations. आप लोग कर लीजिए. 30 I cap plus of your 20 J cap. This is minus. This is your 10 I cap minus of your 10 into your J cap. ठीक है? Am I clear? All the items you can take on one side beta. So it is right now for me 30 I cap minus 10 I cap. So this is your 30 minus of your 10 I cap will be your common. Then plus this is a 20 minus of minus, it will become for me plus. This is your 10 J cap. So this value will be equal to how much for me beta? 20 I cap plus 30 J cap. This will be the answer. So 20 I cap plus 30 J cap. So first option is the answer for this. Clear? Clear beta? चलिए. क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बेटा, बट अभी डिराइव करते बैठना इट विल बी पॉसिबल नहीं होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार. एनीवन? 24 ट्राई कर सकते हैं क्या? देखो, चलो 24 ट्राई करते हैं एक बार. ये वाला मॉडल मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ ऑलरेडी. एक बार देखो. द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज कैलकुलेटेड यूजिंग its measured mass 80.0 plus or minus 0.5 and measure edge 2.00 plus or minus 0.1 centimeter. Which of the following is the correct value of its density? Okay, what is given for me in the problem? एक बार देखो, डाटा लिखो. साइड लेंथ दे रखा है. लेंथ विल बी इक्वल टू 2.00 प्लस आर माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स. And you know that volume will be written as right now for me your L cube. That means this will be equal to 2.00 का होल क्यूब हो जाएगा. प्लस दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी ओनली एल क्यूब अगर निकाल रहे हो तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर, दिस विल बी योर 8.00 सेंटीमीटर क्यूब. रिलेटिव एरर इसमें निकाल रहे हो तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई योर एल. सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.01 डिवाइडेड बाई लेंथ इज हाउ मच फॉर मी? 2.00. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1/2. 3 by 2 and 1.5. This is 0.015. That is approximately 1.5%. Okay. And given for me mass in the problem is given mass is equals to your how much it is? 80.0 plus or minus of 0.5 gram. So relative error in the mass will be equal to how much better? Delta m divided by m will be equal to mass के लिए कितना है? 0.5 divided by this one is 80. So 0.5 divided by 80, that means 1 by 2. 8 to the 16. 1 by 16. Agar if I simplifying it, you will be getting this one approximately 0.
0.800625 परसेंटेज में कर रहे हैं, इंटू 100, इट विल बी 0.625%. जस्ट चेक इट आउट दिस वन बेटा. देन डेंसिटी निकालो. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास कितना है 80.0, वॉल्यूम कितना है 8.00. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 10.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब इसका एरर निकालो. डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो विल बी इक्वल टू योर डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस ऑफ योर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय योर वी. सो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम is how much बेटा? डेल्टा एम की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम एज ऑफ योर 0.5. So delta m by m, I calculated it. I got this one as 0.625 approximately. This will be plus 1.5%. So in दोनों को ऐड करो, it is 2.125%. Now absolute error will be equal to how much बेटा? Which of the following is the correct value of its density with absolute error? मतलब क्या है, आइडिया है ये? वेरी इंपॉर्टेंट है. करेक्ट वैल्यू ऑफ इट्स डेंसिटी विद एब्सोल्यूट एरर एंड द करस्पॉन्डिंग रिलेटिव एरर भी पूछ रहा है. यानी अपने को कितना है रिलेटिव एरर 2.125. तो बेस्ट ऑप्शन आई कैन टेक इज रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी इज 2.125, मतलब ये वाला अपने को दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली. सो इफ आई राइट दिस वन अप्रोक्सीमेटली यही होना चाहिए, इजंट इट? अगर एब्सोल्यूट एरर भी करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा. रिलेटिव एरर निकाल दिया मैंने को 2.1, बाकी के ऑप्शंस में तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा. ठीक है ना? द डेंसिटी ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू हाउ मच? डेंसिटी तो ऑलरेडी आ गया 10, सब में भी 10 है. तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच? एब्सोल्यूट एरर अगर निकाल रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा रो विल बी इक्वल टू 2.125 परसेंटेज ऑफ योर 10.0. कितना होगा? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.2125, अप्रोक्सीमेटली 0.2 समझो, isn't it? So it will be your 10 plus or minus 0.2. That must be the answer. So ये वाला हो जाएगा बेसिकली. क्लियर है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा. अच्छा वाला क्वेश्चन है. यू कैन ट्राई टू डू दैट वन बेसिकली. ठीक है? चलिए बोलो. बहुत क्वेश्चन है अभी इसमें. एटलीस्ट वर्नियर कैलिपर्स के होकर के क्वेश्चंस खत्म कर लो बेटा. अगर आपको नहीं हो रहा इन काइनेमेटिक्स, यू कैन रिव्यू द काइनेमेटिक्स पार्ट. एटलीस्ट व्हाट यू कॉल दैट वन, एरर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर के क्वेश्चंस कर लो. दैट आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वन. 12 मार्क्स का वेटेज है बेसिकली. ठीक है ना? Okay. तो नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करना है बेसिकली? आई डोंट नो वेदर व्हाट इज. हाँ, नेक्स्ट सेशन में विल बी ट्राइंग टू डू द केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर एंड इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन के भी प्रॉब्लम्स करना है बेटा. वो तो डायरेक्टली छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो देख लो एक बार. केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी के पीवाईक्यूज देखो बेटा सीधा. दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है? नेक्स्ट सेशन में केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफर, ये 3 क्वेश्चंस अपने को. आज क्या है? फ्राइडे है. तो सैटरडे संडे, एक बार संडे भी क्लास रहेगा बेटा मोस्ट प्रोबेबली. कल और परसों के क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीटली डू द केटीजी एंड एज वेल एज ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स एंड एज वेल एज ऑफ योर हीट ट्रांसफर.
Elasticity, surface tension, viscosity beta. Only be perfect with your formulas first. ट्वेंटी फाइव एक बार ट्राई करो बेटा. एनीवन कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. देखो एक बार जल्दी से. A physical quantity Q is been calculated using the observation of X, Y, and Z. The percentage error in the measurement of X, Y, and Z are 2%, 3%, and 4%. I hope everyone can do this question directly. This is delta Q by Q into your 100 will be equal to your 2 into your delta X divided by X into your 100. Okay. Then plus it will be equal to your delta Y divided by Y into your 100. Plus it is your 3 into delta Z divided by Z into your 100. चलो बताओ कितना आ रहा आंसर. It will be equal to 2 into the percentage error of the X will be equal to how much for me? It will be 2%. Plus right now for me delta Y may it is directly 3%. Plus it is 3 into this one is your 4%. So it is 2 to the 4, it is 4% plus of your 3% plus 12%. Clear? So what is the best option I can write? 19%. Third option. Then, sure. 17th वन का आंसर बताइए बेटा जल्दी कोई. Which of the following is a dimensional constant? Is a dimensional constant है. स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है बेटा. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ डायमेंशनल वन बेटा. रिलेटिव डेंसिटी को नो डायमेंशन. This is also no dimension and this is also no dimension. Only gravitational constant is having the dimensions of this one. Okay. चलो. आज तक क्लासेस के पूरे आईडीज ओपन थे बेटा. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द आईडीज विल बी ओनली ओपन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन जॉइंड द कोर्स. और कल से विल बी स्टार्टिंग अवर एक्चुअल प्रोग्राम विथ हाईली एक्सपेक्टेड एंड शॉर्टकट्स. ये तो जनरल क्लास थी अब तक जो भी मैंने लिया हुआ था. अब कल से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेडली विल बी ट्राइंग टू डू इन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल रिलेटेड टू द कमिंग चैप्टर. लाइक केटीजी के अंदर क्या करना है, फॉर्मुलेस रिवीजन और डायरेक्ट प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा अपन नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे. ठीक है ना. चलो. ओके. अबू बकर 4 कैसा आया बेटा उसका रेंज बेसिकली. ओके कल की क्लास में कर लेंगे हम लोग बाकी का.